हेलो फ्रेंड्स मु रंजीत ओडब्ल्यूएससी हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2022-23 रो सिलेबस अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट नंबर 2 रे आउ किछि क्वेश्चंस ने की आसी जो माने पार्ट 1 देखि नांती ए वीडियो सरला पर जाकी देखि परिबे आपनकर बहुत काम रे आसीबो। तो चलंतु देर न करिकि स्टार्ट करिबा। आ सब क्वेश्चन ओडब्ल्यूएससी ऑलरेडी पचारि सारछि तो ए क्वेश्चन ऊपर आपन भरोसा करि परिबे कारण ओडब्ल्यूएससी आउ थरे क्वेश्चंस पचारि पारे। तो फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन रिवीजन करथिले सेकंड पार्ट में 51 रु स्टार्ट करिवा। फर्स्ट टाइम जदि चैनल को विजिट करछंती देन सब्सक्राइब करनेबे एवं निजरो सपोर्ट निश्चित देबे। वीडियो भल लागले ही लाइक करिवे शेयर करिवे निज संग मानक सहित। इन इंडिया हु इज द चेयरमैन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल? इंटर स्टेट काउंसिल रो चेयरमैन के इंडिया रे? तो करेक्ट आंसर हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इज नोन एज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स? Constitutional functionary is known as the guardian of the public purse. तो यार करेक्ट आंसर होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग। ठीक अच्छे। इन इंडिया the salaries and allowances of the judges of the Supreme Court are determined by the कहा द्वारा प्रस्तुत करा जाए? तो यार करेक्ट आंसर होगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया माने निर्धारित करा जाए। Who has the power to remove the Advocate General of the state? का बाखरे से पावर अछि to remove the Advocate General of the state? तो करेक्ट आंसर होगा गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक अछि, गवर्नर ऑफ द स्टेट। देखो अटॉर्नी जनरल जदि था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आंसर होता एडवोकेट जनरल अच्छी से आंसर होगा गवर्नर ऑफ द स्टेट। Which among the following is not a constitutional body in India? Not a constitutional body. तो करेक्ट आंसर होगा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन क्लियर ता माने स्टेट इलेक्शन कमिशन, स्टेट फाइनेंस कमिशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन ये होची सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ? ऑब्वियसली जणे सेला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Which term in the preamble of the Indian Constitution implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state? क्यों टर्म बुझाए? तो करेक्ट आंसर कौन हम? जस्टिस, रिपब्लिक, सोवरेन, डेमोक्रेसी। तो करेक्ट आंसर हम सोवरेन। Who has the authority to make advances out of the contingency fund of India to meet unforeseen expenditure? का पाखरे से अथॉरिटी अछि टू मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मेक अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर? तो करेक्ट आंसर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक अछि, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मोर एटा टिके डाउट अछि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हबो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हबो? आपण माने जोटा कंफर्म जानि चंती टिके कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि कि जणेबे। क्वेश्चन नंबर 58 आंसर कोन हबो? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मोर टिके डाउट अछि। As per the Indian Constitution, the Parliament of India consists of the Council of States, the House of People, and the President of India. तीन जन को नेकी राज्यसभा, लोकसभा, President. The Council of States, House of People, and President. Which of the following is a constitutional body in India? तो करेक्ट आंसर हम इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। टिके संपूर्ण क्वेश्चन में मेंशन करा जायतिला। तो या हिसाब रे कोटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ताले नुह? सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुह, सेंट्रल विजिलेंस कमिशन भी नुह, नीति आयोग भी नुह। इन इंडिया द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय? जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय? तो करेक्ट आंसर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक अछि। Which of the following terms is not mentioned in the preamble of the Indian Constitution? Which of the following terms is not mentioned in the preamble of the Indian Constitution? तारा करेक्ट आंसर हम फेडरलिज्म वर्ड एमती किछि नाही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे। फ्रेटर्निटी अछि, रिपब्लिक अछि, इक्वालिटी अछि। Which part of the Indian Constitution is described as the Magna Carta of India? को पार्ट? फंडामेंटल राइट। तो करेक्ट आंसर हम पार्ट 3। If the Comptroller and Auditor General of India wishes to resign, he must address his resignation letter to the? से कहा को रेजिग्नेशन लेटर देबे? तो करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। Which among the following is not a part of the original constitution of India? फंडामेंटल ड्यूटीज जोटा कि आगुरो नथला परे आसिला अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। अच्छा फंडामेंटल ड्यूटीज
क्यों कमिटी रो रिकमेंडेशन रे ऐड कराला कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग हैज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई ए बिल एज ए मनी बिल स्पीकर ऑफ द लोकसभा करेक्ट आंसर हबो स्पीकर ऑफ द लोकसभा हु इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल्स इन इंडिया कॉमन चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल्स इन इंडिया तो करेक्ट आंसर कौन हबो होम मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय कहा द्वारा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए तो करेक्ट आंसर हबो गवर्नर ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट ठीक अछि द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोक सभा एंड द चेयरमैन ऑफ राज्य सभा आर ड्रॉन फ्रॉम कोठ वासे कहार सैलरी स्पीकर ऑफ लोक सभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्य सभा तो करेक्ट आंसर हबो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ठीक अछि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हाई कोर्ट रो जजेस मानकर पेंशन मध्य कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो आसे हु कंडक्ट्स द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंडक्ट करे इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो करेक्ट आंसर हबो यार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केबे एनफोर्समेंट हला तो करेक्ट आंसर हबो 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट हला who appoints the chairman and the other members of the Union Public Service Commission UPSE sorry E no UPSC यार अदर मेंबर आउ चेयरमैन को के अपॉइंट करे तो करेक्ट आंसर हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव करिवार मध्ये अथॉरिटी तांको पाखरे अछि हु हैज द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द रिम्यूनरेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो करेक्ट आंसर हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जति भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने क्वेश्चन आसुची आंसर होची प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सब होची प्रेसिडेंट को गोटे गोटे अथॉरिटी माने तांको पाखरे थिबा गोटे गोटे अथॉरिटी ठीक अछि तांको पाखरे सेति पावर अछि व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए राज्यसभा मेंबर 6 और लोकसभा मेंबर 6 सॉरी 5 लोकसभा मेंबर 5 राज्यसभा 6 ठीक अछि who determines the strength of a high court of a state from time to time depending upon its workload who determines the strength of a high court of a state from time to time depending upon its workload तो correct answer होबो president of india एजारे बहुत जनकर आंसर चीफ जस्टिस ऑफ ना ना ऐसे नहीं हां अछि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत जन क्लिक कर दियंती मने रखिबे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who appoints the chairperson and other members of the National Commission for Scheduled Tribes के अपॉइंट करे chairperson and other members of the National Commission for Scheduled Tribes तो करेक्ट आंसर होबा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखंतु केते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आंसर हलानी who among the following has the authority to establish a common high court for 2 or more state का पाखरे से अथॉरिटी अछि टू एस्टैब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ठीक अछि व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ द लोकसभा ऑलरेडी कहली 5 वर्ष हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज एनेक्टेड अंडर इट फाइनल इंटरप्रेटर किए तो करेक्ट आंसर हबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ही देखे जे जहां भी नियम होची लॉ आसुची से सब कॉन्स्टिट्यूशन को हमर आर्टिकल्स मेंशन करा जाय जहा ताकू किछि प्रॉब्लम फेस माने प्रॉब्लम न दोछि जदी ठीक अछि जोडा कि लास्ट रे से ताकू रिव्यू करे हां करेक्ट वर्ड होछि रिव्यू करे ठीक अछि द आइडियाज ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर प्रीएम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम द कोड निया जाय लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी तो करेक्ट आंसर होबा फ्रेंच रिवॉल्यूशन करेक्ट आंसर विल बी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ ए जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की अपॉइंट करे देखो वीडियोटी फास्ट करूची रिवीजन पर्पज रे करूची बहुत काम रे आपन कर आसी बोली मु भाबुची हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ ए जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तो करेक्ट आंसर हबो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक अछि हु अपॉइंट्स द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया के अपॉइंट करे सॉरी
ए जगह आंसर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक अच्छे मु पीडीएफ देला बेलू मुझे ठीक करदेवी एवं ही ठीक कर दूसरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी करेक्ट आंसर ठीक अच्छे क्लियर नेक्स्ट in India who administers the oath of secrecy to the prime minister and his council of ministers oath of secrecy to the prime minister and his council of minister का पाखे अच्छी पावर तो करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक अच्छे the phrase procedure established by law in the Indian constitution is borrowed from procedure established by law in the Indian constitution is borrowed from कोठो अणाई तो करेक्ट आंसर हम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट आंसर विल बी जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन स्टेट पीएससी किए तार चेयरमैन और अदर मेंबर को अपॉइंट करे तो करेक्ट आंसर हम गवर्नर ऑफ द स्टेट किंतु यूपीएससी जदि लिखा जाता तार चेयरमैन और अदर मेंबर को ताले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता The concept of public interest litigation originated in the which of the following countries? को जरे PIL रो concept start हेतिला तो करेक्ट आंसर हबो United States of America United States of America. Which of the following articles of the Indian Constitution guarantees equality before law? Equality before law. को आर्टिकल मेंशन अछि तो करेक्ट आंसर हबो आर्टिकल 14 आर्टिकल 14. Which constitutional amendment act reduced the voting age from 21 years to 18 years in India? 21 वर्ष रु 18 वर्ष कर दिया गला करेक्ट आंसर कोन हबो 61st constitutional amendment act केबे हेतिला 1999 रे हेतिला 1989 रे अच्छा सेते बेले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के थिले कमेंट बॉक्स में कमेंट करिकि जणेबे The Constitution of India derives its ultimate authority from. The Constitution of India derives its ultimate authority from. कोठु ये भी कौन है जी यार भी आंसर हबो द पीपल ऑफ इंडिया ठीक कर दवा हाँ ये ठीक हबो नहीं पीपल ऑफ इंडिया ठीक अच्छे नेक्स्ट Who among the following moved the historic objectives resolution in the Constituent Assembly on 13 December 1946? Who moved the historic objectives resolution in the Constituent Assembly on 13 December 1946? The correct answer is Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru. Which among the following subjects was transformed from the state list to the concurrent list? अच्छा concurrent list कोट आसी जी ऑस्ट्रेलिया रो through the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. कोडा को ट्रांसफर करा जाइतला एजुकेशन को ट्रांसफर करा जाइतला ठीक अछि क्लियर नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MLA बहुत बेसिक क्वेश्चन हे गला ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द वोटर्स तो करेक्ट आंसर कोन होबा Member of the Legislative Assembly. Member of the Legislative Assembly. At present, how many languages are there in the 8th schedule of the Indian Constitution? At present, 22 languages. How many times was the preamble of the Indian Constitution amended so far? How many times? Preamble को amend करा जाइछि तो correct answer होबा once थरे. Which of the following schedules of the Indian Constitution deals with the allocation of seats in Rajya Sabha to the states and the union territories? वो schedule mention करा जाइछि Indian Constitution रो जोथरे कि allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories रो mention करा जाइछि तो correct answer हबो 4th schedule. Correct answer will be 4th schedule. Who has the power to determine the conditions of service of the chairman and the other members of the UPSC? Who has the power to determine the conditions of service of the chairman and the other members of the UPSC? The correct answer हबो ये मध्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक अछि रिमूव करिवार अपॉइंट करिवार शेषरे डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ सर्विस यार मध्य निर्णय डिसीजन नेबार पावर का पाखरे अछि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पाखरे Which schedule was added to the Indian Constitution by 73rd Constitutional Amendment Act? क्यों schedule को add करा गला
73rd Constitutional Amendment Act रे तो करेक्ट आंसर हम 11th schedule करेक्ट आंसर विल बी 11 नंबर schedule which article of the Indian Constitution guarantees the equality of opportunity in matters of public employment equality before law टिके सम पूर्व क्वेश्चन था जोटा कि आर्टिकल 14 एथर किंतु कोन दिया जायछि guarantees the equality of opportunity in matters of public employment तो करेक्ट आंसर हम आर्टिकल 16 करेक्ट आंसर हम आर्टिकल 16 Which among the following countries has the longest written constitution in the world? ये होचे हमरो इंडिया रो constitution जोटा कि वर्ल्ड रो सबुठु longest लेखा जाइतबा constitution ठीक अछि Which of the following articles of the Indian Constitution lays down provisions for the creation of all India services? एटा आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी आंसर जणाबे Which of the following articles of the Indian Constitution lays down provisions for the creation of all India services? ठीक अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी आंसर जणाबे तो ये थला 100 क्वेश्चन कंप्लीट होला पार्ट 2 रे वीडियो केमती लागला कोन लागला आपन को काम रे आसुची ना नाही निजर रिएक्शन निश्चित कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणाबे ठीक अछि वीडियो टी कंप्लीट देखिथिबारु धन्यवाद।